स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल wave equation with boundary condition. Today's topic is solution of one dimensional wave equation with बाउंड्री कंडीशन। प्रीवियस वीडियोज़ में आपने ये देखा था कि वेव इक्वेशन होता क्या है, उसको हम विदाउट अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आज आपको बताएंगे बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन जब वेव इक्वेशन जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक this is origin, this is x-axis, this is y-axis. Okay students, so let us take O A be an string which is fixed in between, which is stretched in between O and A, having length, the length of the string be L. ओके, सो जब स्ट्रिंग को O और A के बीच में फिक्स कर दिया गया है तो अब ये मूवमेंट कैसे होगा, इसका मोशन कैसे होगा, ये भी हमें जानना है। तो इनिशियली बाउंड्री कंडीशन इस अभी बताते हैं हम होता क्या है। अब हमने इनिशियली जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। ये स्ट्रिंग जो है इनिशियली जो है वह रेस्ट पोजीशन में, जिसकी लंबाई L है, जो O और A दो खूंटियों में बंधी हुई है। इनिशियली रेस्ट का मतलब क्या है, जब टाइम t 0 है तो वेलोसिटी 0 है। क्लियर। अब हम किसी टाइम t बराबर 0 के पर कुछ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ये इस प्रकार से मोशन करता है। इसका मोशन इस टाइप्स का होता है, इसका मोशन इस टाइप का होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन करेगा। होगा क्या, ये स्ट्रिंग की लंबाई L है, स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड हैं, इसलिए यहाँ से हम इसके बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे। बाउंड्री कंडीशंस आप देख सकते हैं क्या होगा। ये दोनों बाउंड्री हैं स्ट्रिंग के। आप ऐसा देख पा रहे हैं कि बाउंड्री पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यदि डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट किया जाए, तो आप सभी जानते हैं ओरिजिन पे, एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट y इज 0, displacement y is 0, displacement is y is 0. Second condition, this is the boundary condition, this is said to be the boundary condition. Second condition, at x is equal to L, y is again 0, because क्योंकि ये दोनों पॉइंट, दोनों एंड्स स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट दो खूंटियों में बंधे हुए हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार का मोशन नहीं होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट y 0 होगा। जब x इज इक्वल टू 0 होगा उस केस में भी, और जब x इक्वल टू L होगा उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज इनिशियल? इट्स इनिशियल कंडीशन।
व्हाट इज इट्स इनिशियल कंडीशन, जस्ट सी। अभी मैंने बताया कि जब स्ट्रिंग को खींच के बांधा गया था, स्ट्रिंग इज फ्लैक्सिबल, वी आर नो रेजिस्टेंस, स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म। ये सारे सपोजिशन जब हमने प्रूफ कराया होगा तो बताया होगा आपको पिछले वीडियोज में। उस केस में जब स्ट्रिंग ओए बांध करके और इस स्ट्रेट पोजीशन में छोड़ा गया है, इनिशियल कंडीशन मीन्स एट t इक्वल टू 0, its velocity del y by del t equal to 0 because of y depend on x and t, x पे यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, और उसके साथ साथ टाइम भी अलग अलग होगा। यहाँ टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम मीन्स इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी समय t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेस जो वेलोसिटी होगी डेल वाई बाई डेल टी 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द सेकेंड कंडीशन अगेन फॉर दैट मोमेंट वाइब्रेशन के लिए, फॉर वाइब्रेशन लेट अस टेक t इक्वल टू 0, वी गिव एन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y is equal to f, we will provide, we will push by this force, we will give a small displacement. Due to this the string is in vibration, up down up down up down. Okay, since it vibrate in only along y axis, so it is said to be the one dimensional wave equation. So what happened after applying all these conditions to the solution of one dimensional wave equation? Let us see students. We know that one dimensional wave equation is del 2i upon del t square c square del 2i upon del x square. This is one dimensional wave equation. So what is its solution? How to solve it? Let, as in previous videos you have seen here y is dependent on x and t. So now let its solution be y equal to x into t. Students, its solution can be taken as y equal to x into t, where x is a function of small x only and t is a function of small t only. Okay students, so now since this is the solution, so now this equation satisfied by this relation. It means that with the help of 2 we will find from equation 2 we will find del 2i upon del t square, del 2i upon del x square. So del y by del t, what happened? Since x is a function of x only, t is a function of t only, so with respect to partial differentiation of y with respect to t, x treated as a constant, so del t upon del t, it should be del t upon del t. So now here, as we know that since t is only function of small t, so del partial derivative differentiation can be considered as taken as a ordinary differentiation, so it should be t
x dt y dt. Okay, this is the first derivative. Now how to find its second derivative? Just see on the next page. Again, differentiating partially, what happened? Del 2y upon del t square is equal to c x del 2t upon del t square. So again we will do like this. Since t is a only function of small t, so it can be taken as partial converted into ordinary differentiation dt upon dt square. Okay, similarly, by the similar way, del 2y upon del x square can be written as t, because of with respect to y the differentiation of with respect to x, the differentiation of y is t is here constant with respect to x, t taken as a constant. So now del 2x upon del x square, so it should be t2 x upon dx square. So these two is said to be the equation number third. These two be taken as equation number third. So with the help of third, from equation third, equation first can be written as, थर्ड की मदद से फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं हम? फर्स्ट को लिख सकते हैं del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज x d2t अपॉन विच इज इक्वल टू c स्क्वायर t d2x upon dx square. Here the variable is not separate, because of in dt side the variable t should be here, x transpose, whenever x transpose to dx side, then in that case the variable will be separated. So now here 1 upon x d2x upon dx square we can write here c square t d2t upon dt square. So again we can say that in previous videos you have seen here LHS is a function of small x only, RHS is a function of small t only. Here we can write here RHS is a function of small x and LHS, it should be LHS is a function of small x and RHS is a function of small t, and both are different variable. So it is possible only when both equate to
same constant. Okay student, that is, let us take k, say k. Okay, now the above equation can be written as 1 upon x to 2x upon dx square equal to 1 upon c square t d2t upon dt square is equal to k. Okay students, so this is fourth equation. This should be fourth equation. Here LHS equal to RHS, LHS equal to RHS equal to k. Now from above we can write 1 by x d2x upon dx square is equal to k. This implies that it should be d2 x transpose to this side, it should be d2x upon dx square minus kx equal to 0. So it can be written as d2 minus k into x equal to 0. Okay students, so here its solution can be obtained by finding its auxiliary equation as well as its CF. So its auxiliary equation can be written as m square minus k, which is equal to 0. So m equal to plus minus root k. Now with the help of these roots, its CF is, so its CF is, what happened, x equal to c1 e to the power root kx, c2 e to the power minus root kx. Okay students, this is the value of x. Now how to find the value of t? To equate this equal to this, we will find the value of t also. See in the next page. So 1 upon c square t d2t upon dt square equal to k. Here we can write this d2t upon dt square minus k c square t equal to 0. This implies that it can be written as d square minus k c square t. So its auxiliary equation m square minus k c square equal to 0. So m equal to again plus minus c root k. Then CF, that is t equal to, in previous class you have learned about this, then t equal to c1 and c2 has been taken, so it should be c3 e to the power c root k t plus c4 e to the power minus c root kt. Okay students, so here this is the value of t. By putting here t is a function of t, we have written in previous page, t should be function of t, x should be function of x. Now here we have proved that t should be function of t. Now by putting the value of x and t in equation, in which equation? In equation 2. What happened? We have y equal to x into t. So y xt equal to x is here
C1 e to the power root kx plus C2 e to the power minus root kx. This is in one bracket, and the value of t is here C3 e to the power c root kt plus C4 e to the power minus c root kt. But this is the solution whenever the constant both side LHS and RHS equated to constant k. But from this discussion we can say that if this is the solution of one dimensional wave equation, so wave equation is oscillating nature. चूंकि वेव इक्वेशन का नेचर जो होता है वो ऑसिलेशन का होता है, इसलिए हम कहीं से भी यह नहीं देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन में कोई भी ऐसा टर्म हो जो ऑसिलेशन को शो कर रहा हो. ओके, सो इट इज द above solution is not acceptable because the wave is oscillation in nature. वेव का जो नेचर होता है वो ऑसिलेटरी नेचर होता है. शो इन द अबव सॉल्यूशन not a single term exists which shows periodic motion. वेव इक्वेशन, वेव कैसा होता है, ऑसिलेट करता है, इसलिए उसका मोशन जो होगा पीरियोडिक मोशन होगा. नाउ टू गेट इट्स सॉल्यूशन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ k either positive, negative or 0. So let us, there arise three cases. So there it arises, it's arise three case first. अभी आपने ये पाया कि ये जो सॉल्यूशन है या वेव के ऑसिलेशन नेचर या पीरियोडिक मोशन को शो करने में असफल है, क्योंकि ये जो कुछ भी है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और x के बढ़ने के साथ साथ y जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है. आपने फिगर के द्वारा भी देखा कि x यहाँ ये बता रहा है, ये रिलेशन ये बता रहा है x और t के बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, लेकिन फिगर के द्वारा ऐसा कहीं नहीं है. यह जो मोशन है वो पैराबोलिक टाइप का है, चूँकि मोशन वाइब्रेशन का हो रहा है, पीरियोडिक हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के नेचर को एक्सप्लेन करने में असफल है.
अतः हम प्रॉब्लम के नेचर से संबंधित सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ इस प्रकार के केस की स्टडी करेंगे. इफ k is 0, if k becomes 0, what happen? Just see, whenever k becomes 0, so it should be 0, this should be 0, this should be 0. So the solution should be c1 plus c2 in one bracket, c3 plus c4 in other bracket, but it is not authentic, it is not correct. Why? Because of whenever the two roots are same, because of if k becomes 0, the roots of the auxiliary equation becomes the same repeated roots, so there exists the solution become c1 plus c2x in one bracket and c3 plus c4t in other bracket. So its solution be, so I think it should be equation number it should be equation number 4, 5. This should be 5. So equation 5th becomes, what happened? yxt equal to c1 plus c2x and in other bracket c3 plus c4t. This is equation number 6. So now again consider the next cases. Case 2, if or when we can write k is positive 0 in first case, k is greater than 0 in second case, that is we will take k equal to p square. So in place of k, if we take p square, so what happen in the at the solution? Just see, if k becomes p square, so it becomes p square, it means the value of auxiliary equation, the value of the roots v plus minus p, so its solution should be c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px. So now, and for the same way for this relation also, if in place of k we will put p square, the roots is again m equal to plus minus pc. So equation 5th is again becomes y xt equal to c1 e to the power px, c2 e to the power minus px, c3 e to the power cpt, this is equation number 7. To find the third case, case third, if k is negative, just see that is k equal to minus p square. हमने p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सिर्फ इसलिए चूज किया कि p की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये k पॉजिटिव होगा और यहाँ p की प्रत्येक वैल्यू के लिए चाहे p नेगेटिव हो चाहे p पॉजिटिव हो, यह k हमेशा और हमेशा नेगेटिव शो करेगा. इट्स ओके. सो k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर. सो व्हाट हैपन टू द सोल्यूशन? सी इन द ऑन द नेक्स्ट पेज. 1 upon x d2 x upon dx square is equal to minus p square. So just see, it can be written as d2 x upon dx square plus p square x equal to 0. So its auxiliary equation be, what happened? D square plus p square x equal to 0. Sorry, it's not auxiliary equation, it is simplified form. Its auxiliary equation be m square plus p square equal to 0. Okay students, it is a
m square plus p square equal to 0. Now here the value of m is plus minus I into p. It means that if we suppose the k is negative, so the roots of auxiliary equation is imaginary. Now its CF is C1 cos px plus C2 sin px, that is x is C1 cos px plus C2 sin px. This is the value of x. Okay students, again 1 upon c square t d2t upon dt square is equal to minus p square. This implies that similarly from the above relation we will obtain the value of t is c3 cos cpt plus c4 sin cpt. From these, so equation 2 becomes what happened, yxt c1 cos px c2 sin px. Okay students, in other bracket c3 cos cpt plus c4 sin cpt. Now this is the another solution, which is equation number 8. Just see, this is whenever k equal to 0, y displacement is this. Whenever y equal to 0, displacement is this. K is greater than 0. Whenever k is less than 0, displacement is. But in all these three cases, in all these three solutions, only this last solution contain the trigonometrical function sine as well as cos, sine function as well as cos function. And as we have studied that trigonometrical function sine, cos are in periodic nature, that's why we can say that only this solution is acceptable because of it shows the nature of the problem. Here we can write of these three solutions, only equation 8 shows or describe the nature of the problem. Why? Because of in this solution, this solution trigonometrical function trigonometrical function sine and cos are available. Since sine and cos both function
both function are periodic in nature, so only it is acceptable. Okay students, now in this study we have seen how to find the solution of one dimensional wave equation. So I am going to apply the boundary condition as well as initial condition to that solution. See on the next page. Now applying boundary condition, if x is equal to 0, we know that y equal to 0. Just we have discussed today in this lecture, video lecture. If x is equal to 0, y equal to 0, equation 8 becomes, what happened? Y equal to 0, it means 0. This is C1 cos 0. C1 cos Px. X is 0, so C1 cos 0 plus C2 sin Px is 0. And next be C3 cos CPT plus C4 sin CPT. Okay students, C4 sin CPT. Here as we know that the value of cos 0 is 1 and the value of sin 0 is 0, so it will be C1 C3 cos CPT plus C4 sin CPT. Okay students, so from this discussion here the product of 2 is here 0, the product of C1 and in bracket C3 cos CPT and plus C4 sin CPT is 0, so either C1 should be 0 or this in bracket should be 0, but condition is that here if C1 becomes 0, sorry, if this bracket becomes 0, so what happened to the solution? Just see what happened to the solution. If this content becomes 0, so its solution, whole solution becomes 0. So this bracket cannot be 0. From here C3 cos, we can say C3 cos CPT plus C4 sin CPT cannot be 0. This implies that only acceptable solution is C1 is 0. Putting in equation 8 we have क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा? y xt C1 0 हो गया तो क्या मिलेगा? C2 sin Px C3 cos CPT plus C4 sin CPT. Okay students, this is equation number 9. After applying first boundary condition, we will get this solution yxt equal to C2 sin Px C3 cos CPT C4 sin CPT. Again the second boundary condition is here. If x equal to L, y is again 0, because just we have discussed earlier. You can see here, if x is equal to 0, it means at this end the deflection y is 0, and if x is equal to L, at this end the deflection y is again 0. So now just see here, if x is equal to L, y is 0, so
by putting x equal to L, y becomes 0, C2 sin PL, and here C3 cos CPT plus C4 sin CPT. Okay students, here the product of C2 into sin PL into this bracket is 0. So now either this may be 0 or this may be 0 or this may be 0. So consider here, if this content becomes 0, this bracket becomes 0, so now equation 9, whole equation 9 becomes 0. C2 becomes 0, again whole equation becomes, because of C2 and this, though both are multiplied together. But if sin PL becomes 0, कोई इससे चेंज यहाँ नहीं देखने को मिलेगा. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि यहाँ साइन PL है और यहाँ साइन PX है, सो साइन PL is only 0. This implies that sin n pi, because of for every value of n, sin n pi is always 0. This implies that p equal to n pi by L. This equal to n pi by L. So by putting this p equal to n pi by L from here to here, the equation 9 becomes y xt equal to C2 sin n pi x by L, n pi by L into x, C3 cos C n pi by L into t plus C4 sin C n pi by L into t. Okay students, so this is equation number 10. This is the solution of the one-dimensional wave equation after applying both boundary condition. Now I am going to apply the initial condition also. Now applying initial condition, what happened? If t equal to 0, del y by del t equal to 0. अभी मैंने बताया कि initially the string is in rest position. It means at t equal to 0 there is no velocity in the string. Now differentiate this. Equation 10, del y by del t is equal to C2 sin n pi x by L, and here C3 and differentiation of cos be minus sine, so it be minus sine C n pi by L into cos, differentiation of cos be sine C n pi t by L, and again plus C4 and again sine, differentiation of sine be cos, and already if we differentiate this term we get C n pi by L, sine differentiation is cos C n pi t by L. So now applying this condition, above condition, t equal to 0, this becomes 0. Now this becomes 0 whenever t becomes 0. So C2 sin n pi x by L, here if t becomes 0, just see this term become, whole term becomes 0 because of sin 0 becomes 0. Here cos 0 becomes 1, so due to this only this term is left here, C n pi L. Okay, so here the product of C2 sin n pi x by L in this should be 0. So what happened? If C2 becomes 0, just see equation 10, whole equation, whole solution becomes 0. If sin n pi x becomes 0, whole solution is again 0. But whenever C4 becomes 0, no change in the solution, only this term becomes 0.
So this implies that C4 should be 0. So equation 10 becomes, what happened to the equation 10? Equation 10 becomes y xt equal to C2 sin n pi x by L only C3 cos Cn pi by L into t. Only this term. पहले इनिशियल कंडीशन लगाने के बाद हमें ये टर्म मिला, इसे हम लिख सकते हैं C2 C3 sin n पाई x बाई L, और क्या लिख सकते हैं cos Cn पाई बाई L इंटू टी. दिस इज yxt. This is equation number 11. This equation can be rewritten as Bn sin n pi x by L into cos Cn pi by L into t. Okay students, this is value of yxt. Now the last initial condition is again applying initial condition t equal to 0. We will give a small displacement fx to the string. What happened if t equal to 0? We will find y applying. So equation 11 becomes, what happened, yxt yxt, in place of yxt we will put fx. Fx is equal to summation bn n vary from 1 to infinity, n vary from 1 to infinity, this becomes sin n pi x by L. Here with the, this is the just like Fourier series where Bn can be calculated with the help of this relation 2 by L 0 to L fx into sin n pi x by L dx. Okay students, so after finding the value of Bn, it is most important, this is very very important. After finding the value of Bn, you will put the result of Bn from here to here. You will get the complete solution after applying the boundary condition as well as initial condition of the one dimensional wave equation. So after finding the value of Bn, put its value in equation, in which equation? Equation 11. We get the complete solution. We get the complete solution of one dimensional wave equation. So it is so systematic, it is so easy. Students, अगर आपको ध्यान थोड़ा सा भी होगा तो मैंने कहीं भी कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं किया है. हाँ, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को समझें, क्वेश्चन को समझें कि जो प्रॉब्लम है वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से रिलेटेड है या नहीं.
अगर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से प्रॉब्लम रिलेटेड है तो निश्चित रूप से उसकी बाउंड्री कंडीशन बिल्कुल यही होंगे जो जिस पर मैंने सॉल्व कराया, बस चेंज हो सकता है तो इनिशियल कंडीशन में हो सकता है ऐसा हो सकता है कि इनिशियल कंडीशन में, जो कि मैं बताऊं, इनिशियल कंडीशन में आपने ये देखा होगा जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि जब इनिशियली स्ट्रिंग रेस्ट पोजीशन में हो सकता हो किसी प्रश्न में इनिशियली उसे इस पोजीशन में रखा जाए और फिर छोड़ा जाए, उस केस में इनिशियल ये पहले हम अडॉप्ट करेंगे और ये इसकी वैल्यू हम बाद में, जब यहाँ से छोड़ा जाएगा और इस पोजीशन में आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी समय t पे यहाँ 0 नहीं होगा, तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। और क्या चेंज हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन स्ट्रिंग की लंबाई चेंज हो सकती है, ये L चेंज हो सकता है। इसलिए इसका बहुत ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में सिर्फ L चेंज हो सकता है या इनिशियल कंडीशन प्रश्न में चेंज हो सकता है, एफएक्स चेंज हो जाए। क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक अलग अलग क्वेश्चन के लिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, तो इसका बहुत ध्यान देंगे। प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान देंगे कि उस प्रश्न में लिखा होगा ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेन्ड इन बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग लेंथ L या हैविंग लेंथ 2 मीटर, हैविंग लेंथ पाई मीटर, जो कुछ भी है, तो क्या चेंज होगा, स्ट्रिंग की लंबाई चेंज होगी और इनिशियल कंडीशन चेंज होगा, जिस पे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत सीधा पहले हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। मीन्स क्वेश्चन के सोल्यूशन में इस हद तक तो कोई चेंज नहीं होगा, मैं बता दूं, यहाँ तक तो देयर इज नो चेंज अप टू दिस, अप टू 10th इक्वेशन। स्टूडेंट 10th इक्वेशन तक आप बिल्कुल आंख बंद करके रट जाइए, समझ लीजिए, रटने की बात नहीं, मैथमेटिक्स समझ लीजिए। 10th इक्वेशन, नो चेंज अप टू दिस इक्वेशन। क्या चेंज हो सकता है, L चेंज हो सकता है, लंबाई चेंज हो सकता है। अगर पाई होगा तो यहाँ पाई लिख देंगे, 2 होगा तो 2 लिख देंगे। और क्या चेंज हो सकता है, अब इनिशियल कंडीशन डिफरेंट इनिशियल कंडीशन के लिए डिफरेंट एफएक्स के लिए यहाँ Bn की वैल्यू चेंज हो सकती है। इस तरह से हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सोल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एज वेल एज इनिशियल कंडीशन हमने फाइंड आउट किया। हम अगले वीडियो में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू।